Right then, marginal costing. So this, now we are just discussing the basic of marginal costing. Then we will move on to the relevant costing and decision making. Focus now on marginal costing. The basics, I think probably the thing that I'm going to say for the next 5 to 8 minutes, 5 to 10 minutes is what you've already done in your IBCC level. But to get started, yes, we have to take heads up as far as that is concerned. So income statement in marginal is nothing but sales minus variable cost giving us contribution less fixed cost giving us net profit. Your favorite is this. So income statement, sales minus variable cost contribution minus fixed cost is equal to your net profit. Two important things to pay attention here is what is variable cost, what is fixed cost. Fixed cost we've written here, no change in cost with change in production. So even when change in production happens, still the cost remains same. What is variable cost? Change in cost with change in production in linear. So the change in production will equivalently change your variable cost as well. Remember one important point to note which I have not purposely written here. Fixed cost per unit changes, whereas variable cost per unit is always constant. Variable cost in totality changes, whereas fixed cost in totality does not change. Keep this small point in mind, you would know it, but still. So fixed cost per unit changes, in totality remains same. Fixed cost per unit constant, in totality changes. Semi-variable cost fixed plus change. So your example will be a rent, your example will be a direct material, direct labor. Your semi-variable cost example will be your telephone bill, fixed plus change both. How do you calculate that? Change in total cost upon change in output. That will give you the variable portion. Using that you can calculate the fixed portion as well. So that is something about your semi-variable cost. Moving on. So just magnifying this whole diagram, the diagram that we made here, this whole statement into a diagrammatic format. So sales subdivided into variable cost and contribution, subdivided into fixed cost and net profit. So it is the sales which is responsible for variable cost and contribution. It is the contribution which is responsible in turn for fixed cost and recovering the net profit. So here this contribution, what is the formula? It is PV ratio, is also called as the contribution ratio. Profit volume ratio. As your volume will increase, your profit will also keep on increasing in the same amount as your contribution increases, because fixed cost the same hai. Fixed cost will remain as it is, contribution will keep on changing. That will directly impact my profit because my fixed cost is same here, fixed cost is same here. Contribution is this, contribution increases to this, my fixed cost will, my net profit will also increase by that. So my profit will directly be impacted by my volume in terms of the contribution that I am earning on every sale. Keep it simple, PV ratio is equal to contribution upon sales. Fixed cost, what is fixed cost? Fixed cost is the cost which will remain constant irrespective of your output. Now we have the concept of break even. What is break even? No profit, no loss. How do you calculate break even, or what is break even? Break even is the contribution required to recover the fixed cost. I have written here contribution to be earned to recover the fixed cost. It is basically my risk analysis of loss making. So there is a risk that I may make a loss. Break even point will ensure that at least I am not going into losses if I make these number of units. So break even point in units is fixed cost upon contribution per unit, whereas break even point in value will be fixed cost upon PV ratio. What is break even point? Contribution required to earn to recover fixed cost. Risk analysis of loss making is what you can term it as. Then comes my net profit. The moment I go beyond my fixed cost, I will be able to be safe. So that is your margin of safety. What is your margin of safety? It is net profit upon contribution per unit or net profit upon PV ratio. That is basically your margin of safety, making you safe. So contribution has two major responsibilities: recover your fixed cost, second, recover your net profit, and that is where the whole system works. So this is about my basics understanding of my sales, variable cost, contribution, fixed cost and net profit. Now this break even point can be utilized in a lot of places for decision making. First in line, break even sales plus margin of sales will give me, margin of safety sales will give me the total sales. How do you calculate a composite break even point? Composite. When you say the word composite, it means more than one.
So more than one product with common fixed cost. So fixed cost I have to recover. From where do I recover the fixed cost? So fixed cost is recovered through contribution. Fixed cost will be recovered through contribution. But there are more than one product to recover that. So here the contribution will be average contribution per unit or average PV ratio. Break-even point for composite basis, more than one product. Recover the fixed cost ही करना है. How do I do that? Through average contribution per unit. Average contribution से मैं recover करूँगा through average contribution and दूसरा सामने क्या है? Average PV ratio. So recovery of fixed cost through contribution. But because more than one product will contribute, so average contribution per unit is probably what I am looking at. Clear? Next in line is in case of perishable product. If you see your PM, first question is what you will get this. So break-even point is opening stock. So first in, first out. Perishable product by default it is first in, first out. So I will sell my opening stock first, then the current year production. So first I will recover as much as I can from my opening stock. Then the remaining fixed cost will be recovered from the current sales. So opening stock plus remaining contribution plus contribution, remaining fixed cost upon contribution per unit. So break-even point in case of perishable product will be opening stock, recover as much fixed cost as you can from this opening stock. Still there will be some fixed cost which remains. So remaining fixed cost upon contribution per unit is the break-even point in case of perishable products. In case of capital budgeting, it is the discounted PV, cash inflow upon discount is equal to discounted cash outflow. Then break-even point for decision making. So whenever decision making is involved, then your relevant fixed cost, which we'll see how to calculate relevant cost, plus opportunity cost. Again we'll see what exactly is opportunity cost, but both of them being so very relevant for my decision making, divided by contribution per unit. So this is what I have to recover. This is what I have to recover. Again, from where? From my contribution will give me my break-even point as far as decision making is concerned. There's a question in PM again. You are approached by a friend that is based on this fundamental. Correct? So this is about my basics of marginal costing, starting with this whole diagram. Sales is equal to variable cost plus contribution is equal to fixed cost plus net profit, fixed cost, recovery, break-even point, net profit, recovery, margin of safety. Then comes my break-even point analysis. So composite, fixed cost again I have to recover, but with more units, so average contribution. Perishable product, then break-even point is opening stock plus remaining fixed cost upon contribution. Capital budgeting, discounted cash inflow, discounted cash outflow. Decision making, total relevant fixed cost plus opportunity cost upon contribution per unit. So this is the basic understanding of that. Now step 2 is probably understanding the difference between absorption and marginal. Students, a lot of confusion as far as this understanding of absorption and marginal is concerned. So let us clear out that as well. Now in absorption, again basic IPCC level thing, fixed costs are charged, absorbed, recovered, one and the same thing. Charged, absorbed, recovered, one and the same thing on a per unit basis. So per unit basis is what I will convert my fixed cost to. How do I do that? Budgeted overhead divided by number of units. So budgeted fixed overheads divided by budgeted level of activity, number of units, number of machine hours, number of labor hours, as the case may be, whatever base that you take. Based on that you will find out a recovery rate, and the whole working for fixed cost will work on that recovery rate. Correct? Whereas in marginal costing, no tension, it is always on a totality basis. It is not concerned with the recovery rate, with the number of units, with the number of hours at all. Clear? So absorption, marginal. In absorption, fixed cost recovered on a per unit basis. In marginal, always on totality basis. Second major point of differentiation is valuation of stock. Now students usually get confused here. Remember, that's it. That one absorption and marginal difference is that fixed cost here is on a per unit basis recovery. This is always totality. You will never find in marginal that fixed costs are recovered on a per unit basis. And the second point of differentiation is the valuation of stock. In valuation of stock, in absorption and marginal, the point of differentiation is again fixed overhead. Here variable production, the stocks. So stock includes opening plus closing. Both opening and closing stocks are valued in absorption at variable production cost per unit plus fixed production cost per unit.
because here even fixed production costs are also calculated on a per unit basis, whereas in marginal it is only variable cost, production cost per unit. Why? Because there is no concept of fixed cost per unit in marginal. So therefore your stocks are valued only on variable production cost per unit, whereas in absorption it is valued on variable production cost per unit plus fixed production cost per unit. So this is the major point of differentiation between absorption and marginal. Absorption and marginal. Any question? So we will then move on. So here note, cost of production under marginal does not include fixed factory overheads, and therefore value of stock comprises of only variable cost. But in absorption the variable plus fixed, so this fixed is also sitting in my opening and closing stock as far as absorption is concerned, but as far as marginal is concerned it is not the case. That becomes a major point of differentiation. You can reconcile and you will get the answer. So this is about the basics of your marginal that we have covered. Next in line is your relevant cost. Thank you. Alright then, brace yourself as we move on to the most important aspect. So we are done with marginal basics. Now comes relevant costing, decision making. So as I said, this is the most important aspect that we have in your advanced management accounting, and that is the reason you are becoming a chartered accountant. Not to do simple things, but to take decisions, and decisions will always be based on the fundamental of relevant cost. So this makes it so very lively, so very important, and so very practical. Alright, let us understand what exactly is a relevant cost. Now, relevant cost, first thing that you need to understand is what is a relevant cost? A cost which you are going to incur for a particular project. मेरा normal business चालू है, ठीक है? अभी मेरे को कोई specific order आया, वो order का मेरे को अलग से कुछ cost find करने का है. That cost will become a relevant cost for the new order that I am receiving. Now, let's try and understand this. I am in 10th standard. मैं confused हूँ कि मैं commerce लूँ, arts लूँ या science लूँ. So I have to make a decision, correct? One. So where I have to make a decision, there I will have to find out my relevant cost. चलो सर decision ले लिया, फिर क्या? Decision कब के लिए लिया है? Future के लिए लिया है. So these are the two very vital aspects of relevant cost, that whenever a decision has to be taken and that decision pertains to future, that becomes your relevant cost. So समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और कुछ clarity. Let's take some examples. There are 3 to 4 examples that I will want to discuss with you, and once we are through with that, we will be understanding the various charts that I have drawn for decision making and relevant costing. So first things first, we will understand the examples that I have written here. Just try and understand the examples. Don't infer anything. No need to do anything of that sort, because inference is what we will do within few minutes from now. Suppose I have a staff, I have a coaching class, I have an establishment, मेरा educational institution है, तो उसमें मेरा एक staff है, वो staff का salary है 15,000. सर आप आपके इंस्टीट्यूशन में क्या पढ़ाते हो? मेरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ आईपीसीसी और सीए फाइनल. तो सीए फाइनल में आईपीसीसी अभी पढ़ा रहा हूँ, सीए फाइनल भी पढ़ा रहा हूँ. उस स्टाफ को मैं 15,000 रुपीज का सैलरी देता हूँ. मेरे पास कुछ सीपीटी की इंक्वायरीज आई है. सो नाउ आई एम प्लानिंग कि क्यों ना सीपीटी भी स्टार्ट किया जाए. डेफिनेटली. सो अभी मैं सीपीटी स्टार्ट करूँ तो वो एक अलग से एक वेंचर हो जाएगा, काइंड ऑफ एक अलग मेरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस हो जाएगा. So before that, I will want to analyze that whether I am going to make any profit, whether I am going to get any net benefit from that. So for that, now I will start my analysis for my the batch that I am going to start, which is CPT. तो CPT से मैं देखूंगा फिर मेरे को कितना रेवेन्यू आने वाला है, कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं. At the same time, I will see कि मेरे को कितना कॉस्ट इंकर होने वाला है. तो कितना कॉस्ट इंकर होने वाला है, उसमें से मैं एक जगह पे कंफ्यूज हो गया हूं. ये जो स्टाफ सैलरी है, उसको मैं ना अभी 15,000 रुपए देता हूं. नाउ इफ आई एम स्टार्टिंग विद सीपीटी, आई एम स्टिल गोइंग टू पे हर द सेम 15,000.
बट नाउ व्हाट आई डू, जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अभी मैं ये जो 15,000 है ना, उसमें से 7,500 आईपीसीसी पे डालता हूं और 7,500 फाइनल पे डालता हूं. Once I start with CPT as well, what I will do is I will put 5,000 here, 5,000 here and 5,000 here. Tell me, is it a relevant cost? The answer is no. Why? Because even if I accept the decision to go ahead with CPT, or even if I reject the decision to go ahead with my CPT, is my staff salary changing? The answer is no, and therefore it is not a relevant cost. Inference that I can make from here is costs which do not change with changing decisions are not relevant, and costs which change with changing decisions are relevant costs. I hope you understood. All right. So costs which change with changing decisions are relevant costs, and costs which do not change with changing decisions are irrelevant costs. Now, this 5,000, the staff salary of 5,000 that I am actually paying extra, absolutely no. Now, if I connect it with here, see, will this be a relevant cost? What is a relevant cost? I have written here. It is future oriented. So yes, it is future oriented. And it should differ among alternative course of action. Does it differ among alternative course of action? मतलब सीपीटी चालू किया तो मैं क्या ये स्टाफ को 15,000 की जगह 20,000 दे रहा हूँ या अभी भी 15,000 ही दे रहा हूँ? सर अभी भी 15,000 ही दे रहे हो, then it is not a relevant cost. सीपीटी चालू करने पे मैं सोच रहा हूँ उसको फिक्स 6,000 रुपीज और उसका सैलरी बढ़ा दूं, then yes, then it is a relevant cost. So it is differing among alternate courses of action, then it becomes a relevant cost. Whereas if it doesn't differ, then it is a irrelevant cost. हाँ, as a accountant, as a मुनीम मैं ये 5,000 उसको चार्ज कर दूंगा, but that does not become my relevant cost because actual खर्चा हो रहा है क्या, actual cash outflow हो रहा है क्या, ये decision की वजह से the answer is no, and therefore it becomes a irrelevant cost. Connected here. So relevant. What is relevant? It should be future oriented, मतलब decision तो future oriented ही होगा, plus it should differ among alternative courses of action. If it does not, it is not a relevant cost. Take two. Let's take a second example. अभी I completed my CA. Even you are going to complete your CA within next 2-3 months. अभी खाली exam तो एक formality है. I'm sure all of you who are watching this video are going to clear the examinations. So CA बनने के बाद क्या करने का is the big question every chartered accountant is faced with. You are faced with the question कि मैं सर्विस में जाऊँ या सीधा मेरा खुद का प्रैक्टिस चालू कर दूँ या कुछ और करूँ. अभी जैसे somebody like me, I thought मेरे को तो सिखाने का बहुत ज़्यादा पैशन था, so I thought कि चलो I should open my own classes. So मैं वो करूँ, क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है. तो मैंने घर वालों को जाके पूछा, तो अपन तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिलता है ना वो करने का. ठीक है. सो रेवेन्यू वाइज तो उन्होंने मुझे बोल दिया क्या है, बट कॉस्ट मुझे देखना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं. सो यहाँ पे मैं देखने को बैठा, मैं बोला यार चलो देखते हैं क्या क्या कॉस्ट हो रहा है. रेवेन्यू मेरे को सर्विस में पता है कितना है, कितना कॉस्ट हो रहा है जरा देखूं तो सही, तो मुझे पता चले कि नेट मेरे हाथ में कितना आ रहा है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा आएगा वो मैं चूज कर लेगा. तो कॉस्ट में मैं देखने लगा तो सर्विस के लिए कुछ कॉस्ट इंकर करने का जरूरत है क्या? आंसर इज नो. जो भी ये पूरा सैलरी मेरे जेब में आने वाला है, सो ऐसा कोई कॉस्ट इंकर करने का जरूरत नहीं. फिर मैं बोला कि चलो प्रैक्टिस चालू करते हो, तो प्रैक्टिस चालू करेंगे तो कुछ कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा. यस, एक खुद का ऑफिस लेना पड़ेगा, जगह लेना पड़ेगा, करेक्ट. सो वहां पे मेरे को प्रैक्टिस अगर मैं चालू करता हूँ तो मेरे को जगह लेना पड़ेगा, से 5 लाख रुपए का मेरा रेंटल खर्चा हो जाएगा. जो अदरवाइज मेरे को सर्विस में रेंट का कुछ खर्चा होने वाला है क्या? चलो नो. तीसरा लेते हैं, फॉर एग्जांपल खुद का क्लास चालू करता हूँ, तो क्लास चालू करूंगा तो क्लास प्रीमाइसेस लेना पड़ेगा, मेरे को पेरेंट्स और स्टूडेंट को बिठाने के लिए एक ऑफिस लेना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल उसका भी 5 लाख रुपए का मेरे को रेंटल खर्चा होगा. नाउ व्हेन आई एम कंपेयरिंग वेदर आई शुड गो अहेड विद सर्विस और प्रैक्टिस, विल दिस 5 लाख बी रेलेवेंट? आंसर इज यस. बाय फ्यूचर ओरिएंटेड, यस. दूसरा, डिफर्स अमंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ. What are the alternate course of action? या तो सर्विस में जाओ या प्रैक्टिस में जाओ. Alternate course of action लिया तो इधर 5 लाख नहीं हो रहा है, इधर 5 लाख हो रहा है. Is it a relevant cost? Second,
सेकंड कंपैरिजन, प्रैक्टिस करूं या क्लासेस खुद का चालू करूं यार, समझ में नहीं आ रहा है. अगेन हियर व्हेन द कंपैरिजन इज बीइंग डन, कॉस्ट तो इंकर होने वाला है रेंट का, बट इज इट रेलेवेंट? नो. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट डिफरिंग विद ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. यही अगर मेरा 5 लाख की जगह पे 6 लाख क्लासेस का रेंट होता, देन यस रेलेवेंट है, पर कितना? ओनली 1 lakh, द डिफरेंशियल अमाउंट which is differing among alternate courses of action. क्या क्लासेस और सर्विस के लिए 5 lakh relevant है? Yes. Why? Again, future and differing among alternate courses of action. I hope everybody is clear with what is a relevant cost to start with. और एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग. Again, you know, once you complete your CA, suppose अपना एक right time पे right age पे CA complete हो गया आपका, say by 21 and a half, 22, 23 तक भी हो गया, तो there is always a feel कि चलो और थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, अभी टाइम है अपने पास, करेक्ट, थोड़ा जॉब वॉब 1-2 साल करके फिर जॉब MBA कर लेते हैं. So say for example, I was also faced with this dilemma. You know, I did a job with JP Morgan and JP Morgan के साथ जॉब के साथ मैंने MBA के एग्जाम्स भी दिए, जेन्युइनली GMAT दिया था मैंने. I got selected also, SPG in Dubai, Singapore, I got selected. So now I was confused कि यार MBA करूँ कि नहीं करूँ. So एक पॉइंट तो था कि you know how good value addition it is going to make. दूसरा मेरे को कंटेंशन था कि यार टोटल मेरा खर्चा कितना होने वाला है अगर मैं MBA करता हूँ, तो मेरा टोटल खर्चा कितना होने वाला है अगर मैं MBA करता हूँ तो मैंने कॉल किया मेरी MBA कॉलेज को, SPG इनको से, मैंने उनको बोला भाई कितना खर्चा होगा, तो उन्होंने बोला देखो हमारा 2 साल का जो कोर्स है उसका टोटल कॉस्ट है से 10 lakh पर एनम. आप 2 साल करोगे तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो. ओके, मतलब 20 lakh होने वाला है. प्लस अभी मेरे को JP Morgan का जॉब छोड़ना पड़ेगा. आई विल हैव टू JP Morgan का जॉब मेरे को छोड़ना पड़ेगा. सर आपको JP Morgan में कितना मिलता था? मेरे को उधर यार 12 लाख रुपया पर एनम मिलता था. 12 लाख पर एनम. ओके, बट सर एक फायदा है, अगर अपन ने MBA किया ना तो अपने को इधर इंटर्नशिप करने को मिलता है. यस, इंटर्नशिप मिलता है. सो इंटर्नशिप कितना मिलेगा? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली से 1 lakh पर मंथ. ये अपना ये CA का इंटर्नशिप नहीं है, चिंदी वाला नहीं रहता. गुड अमाउंट इज व्हाट यू विल गेट हियर. 1 lakh पर मंथ से इनटू 2 months पर ईयर. सो इनटू 2 साल टोटल में काम करने वाला हो तो सब 2 और 2 4 लाख रुपए अपने को मिल सकता है यहाँ पे इंटर्नशिप का. So now I started calculating कि भाई मेरा टोटल कितना खर्चा होने वाला है. So मैं बोला कि यार ये 20 लाख रुपए का तो प्योर खर्चा दिख रहा है. करेक्ट सर, 20 लाख का तो खर्चा है ही. सामने इंटर्नशिप का जो मेरा पैसा आने वाला है वो मेरा उतना पैसा बच जाएगा जो अदरवाइज मेरा नहीं बचता था. करेक्ट. Now this is the game changer. This is the game changer. Is this a relevant cost? And the answer is yes, because this is the benefit that I am foregoing by taking some other course of action. So if there is any benefit foregone for alternate course, then in that case this becomes a relevant cost, जिसको अपन प्यार से कहते हैं opportunity cost. And yes, this also becomes a relevant cost. So 12 lakh तो साल का into 2, 24 lakh is the total cost that will also be calculated when I am calculating my relevant cost for MBA. So 20 lakh तो MBA करने का खर्चा, so which is the cost that I am going to incur. So cost to be incurred वो तो है ही. उसके अलावा 24 लाख जो मेरा जाएगा, 24 लाख मेरे तो सीधा पीछे में जाता था, वो बेनिफिट लॉस्ट, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या वो मेरा रेलेवेंट कॉस्ट है? आंसर इज यस. बट उसमें से कुछ मेरा पैसा बच जाएगा, which is nothing but the benefit that I am going to gain. And this is my total relevant cost of doing an MBA. It is not only cost incurred and benefit get deducted. For a layman it may be that way, but for a chartered accountant, from now for you the total relevant cost is cost to be incurred plus benefit lost or opportunity cost less benefit gain. Now quickly we can just come to this diagram. So what are cost as such divided into 2 parts, relevant and irrelevant, for the purpose of relevant costing. Again, this should be future oriented, it should differ among alternate course of action,
मेरा एक्चुअल कैश फ्लो होना चाहिए, कैश आउटफ्लो होना चाहिए, तब जाके वो रेलेवेंट कॉस्ट बनेगा. इररेलेवेंट या नॉन रेलेवेंट क्या है सर? संक कॉस्ट या फ्यूचर इंडिफरेंट कॉस्ट. संक कॉस्ट अपना फेवरेट कॉस्ट है वो तो यार. संक कॉस्ट मतलब कॉस्ट विच हैव ऑलरेडी बीन incurred before the decision is taken. So decision के पहले कुछ cost ले लिया है, even though वो decision से related है तो फिर भी वो irrelevant है, because वो cost is not future oriented and मेरा relevant cost is future oriented. Yes. Next. So यहाँ पे it is a past historical cost which cannot be changed for any current or future action. तुम्हारा सबसे favorite example market survey. Other is committed cost. Now committed cost थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना उसको. committed cost मतलब वो cost जिसका पेमेंट फ्यूचर में होने वाला है पर कमिटमेंट उसको पहले से ही दे दिया है. committed cost मतलब पेमेंट फ्यूचर में बट कमिटमेंट पहले से ही दे दिया है. सर एक एग्जांपल दो. एक एग्जांपल है तुम लोग ना रांका बिल्डर्स करके एक तुम लोग पीएम का समय दिखेगा तुम लोग को, वहां पे है. तो समझो मेरे को ना एक बिल्डिंग बनाने का, तो अभी वो बिल्डिंग मैं बनाऊं कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो मैंने एक आर्किटेक्ट को फोन किया और उसको बोला कि यार देख मेरे को एक बिल्डिंग का डिजाइन बना के देना. उसने बोला कि ठीक है सर 5 लाख रुपए होगा. बोला ठीक है मैं 2 लाख रुपए एडवांस भेजता हूँ, 3 लाख बिल्डिंग बनने के बाद दे दूंगा. मैं बोला कि ठीक है सर. तो फिर मैं उसको बोला कि बाकी का 3 लाख चल बिल्डिंग का काम चालू होगा तब तेरे को दे दूंगा. तो अभी 2 लाख उसको भेज दिया, बराबर है. उसने मुझे बिल्डिंग का डिजाइन बना के मेरे को दे दिया. अब बिल्डिंग का डिजाइन बना, सब बना और फिर बाद में मुझे पता चला यार नहीं मेरे को बिल्डिंग नहीं बनाने का. आर्किटेक्ट ने तो अपना काम पूरा कर दिया ना डिजाइनिंग का, समझ रहे हो. तो अब वो 3 लाख रुपया तो मेरे को देना पड़ेगा ना, इररिस्पेक्टिव मैं बिल्डिंग बनवाऊं या बिल्डिंग ना बनवाऊं, मुझे वो 3 लाख तो देना ही है. सो इज इट डिफरिंग विद माय कोर्स ऑफ एक्शन? And therefore, is it a relevant or irrelevant cost? And therefore, even though to be incurred in future, मतलब पैसा बाद में जाने वाला है, but फिर भी क्या बन जाता है वो committed होके भी irrelevant. Are you understanding? Next, future indifferent cost, identical material हुआ. मेरा जो स्टाफ का जो एग्जांपल दिया था सेम ही है, जो indifferent रहेगा भले ही फ्यूचर में कुछ कॉस्ट होने वाला है. या फिर अपना सीए वाला एग्जांपल, प्रैक्टिस सर्विस वो वाला, you can take either. So just this is like a summary I have made. Relevant cost is a cost to be incurred plus benefit loss, which is nothing but your opportunity cost less benefit gain. In totality gives you relevant cost. Cost which changes in decision making. A cost is relevant for decision making if it is influenced by the decision under consideration. The things that we've already discussed. Opportunity cost is the revenue foregone from the alternative best course of action. Say for example मेरे को Deloitte, PwC और EY 3 जगह से मेरे को ऑफर है. Deloitte 8 लाख दे रहा है, EY 10 लाख दे रहा है, PwC 12 लाख दे रहा है. तो ये तीनों छोड़कर मैं तो मेरा क्लासेस चालू कर रहा हूं. So I am not taking any of them. So in such scenario, can I say this becomes my opportunity cost? Here, just pay attention. Alternate best course of action. Best course of action तो मेरे लिए क्लास है, वो तो मैं चूज कर ही रहा हूं. उसका ऑल्टरनेट मतलब क्या छोड़ के मैं इधर आ रहा हूं तो उतना तो रिकवर करूं. Is what opportunity cost is. PwC, not a total. Alternate best. Alright? Next, irrelevant. Sunk cost is irrelevant. Apportioned cost हुआ, notional, historical, committed. All of these costs are irrelevant costs. So that sums up kind of my relevant and irrelevant. Okay, so now we are done with the general relevant cost. We've identified what is a relevant cost, we identified what is a irrelevant cost. Now into the more detailing. So relevant cost as such will be divided into 3 aspects: material, labor, overheads. What is a relevant material cost? What is a relevant labor cost? What is a relevant overheads cost? Obviously overheads will further be subdivided into fixed and variable. Let's quickly go through that as well. So material. Now if there is a project wherein some material is required, I will analyze whether that material is in stock or whether that material is out of stock. If that material is out of stock, then in that case I will have to purchase it specially for this project. So what is the purchase price or what is the replacement cost as such will become my relevant cost. What if it is in stock? If it is already in stock, then it can have 2 things.
either it is used regularly by other projects or by other products as well. If that is the case, then in that case it's as good as getting a new material for my project, because in any case it is going to be replaced as such. Or if I take it from the company which is already there, then the company will have to replace it, one and the same meaning. So if it is in stock, but if it is regularly used, then my relevant cost is my replacement cost or my new purchase cost, as the case may be. Again, book value you would have purchased is a sunk cost, absolutely irrelevant. So if it is out of stock or if it is in stock, my relevant cost is the purchase cost or the purchase price. But if it is in stock, but if it is useless, like an article clerk, so if it is useless, then in that case I will sell it out in the market. वो जो मेरा मटेरियल है ना, वो भी मैं बेचने को चले जाऊंगा. मैं बेचने को जा ही रहा था कि ये प्रोजेक्ट ने मुझे रोक लिया, बोला कि नहीं मुझे चाहिए, तो वो मटेरियल क्या बोलेगा, अरे यार मैं अभी अपने आप को बेच देता तो मेरे को पैसा मिलता था, अब वो नहीं मिलके मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तो उतना तो मेरे को फोरगो करना पड़ा ना तेरे पास आने के लिए. टेंशन मत ले, उतना मैं तेरे को रिकवर करके देगा. अभी अगर मैं उतना रिकवर करके देगा तो उतना मेरे लिए कॉस्ट हो गया ना यार. सो दैट इज नथिंग बट माय resale price. So useless, then resale price, or if it can be used as a substitute in some other project, then in that case the substitute value. So now what happens is this, practically this material can be used somewhere else. Now the material is going to be used here, so that substitute will have to be purchased. तो वो substitute का जो cost है, अब वो ये प्रोजेक्ट को रिकवर करना पड़ेगा. So material divided into two aspects, either it is out of stock or in stock. If it is out of stock, then replacement cost or purchase price. If it is in stock, then you have to check whether it is regularly used or useless. If it is regularly used, then the replacement cost. If it is useless, then resale price or substitute, as the case may be. Alright? So this is about material. We move on to the labor aspect. So labor again can be divided into two aspects. Labor can either be casual labor or a permanent labor. Casual labor or a permanent labor. If it is a casual labor, तो जब भी मुझे प्रोजेक्ट चाहिए तब मैं उसको बुला लेगा. नॉर्मल मतलब वो बिजी नहीं है, तो जितना जब भी मैं बुला लेगा उसको जितना कॉस्ट इंकर होने वाला है, that becomes my labor cost to be incurred. Whereas if that labor is busy, then in that case वो बोलेगा भाई देख मेरा जो कॉस्ट है वो तो है ही, उसके अलावा मैं कुछ छोड़ के आ रहा हूँ, उसका कंट्रीब्यूशन कौन रिकवर करके देगा, मैं रिकवर करके देगा, नया प्रोजेक्ट बोलेगा. एंड देयरफॉर लेबर कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट इफ इट इज अ कैजुअल प्लस बिजी लेबर. वेयरएज इन केस ऑफ परमानेंट, अगर वो आइडल है तो वैसे भी मेरे लिए एक कॉस्ट जो इंकर हो चुका है, ये मेरा काइंड ऑफ कमिटेड कॉस्ट है, देयरफॉर इररिलेवेंट, एंड देयरफॉर रेलेवेंट कॉस्ट है ही नहीं, तो रेलेवेंट कॉस्ट है ही नहीं, तो मेरा नील हो गया. एंड परमानेंट में बट बिजी है, देन इन दैट केस मैं मेरे दूसरे डिपार्टमेंट से उसको इधर ला रहा हूँ, तो उसका जो जनरल कॉस्ट है वो तो इंकर होने ही वाला था, वो डिपार्टमेंट में काम करे ये डिपार्टमेंट, पर बिकॉज वो डिपार्टमेंट से छूट के इधर आ गया है, उधर का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन छूट गया है, दिस प्रोजेक्ट विल हैव टू रिकवर दैट एज वेल. So labor can be divided into two subparts, either casual or permanent. If it is casual and normal, then labor cost to be incurred. Whereas if it is a busy labor, then in that case labor cost plus contribution loss. Whereas अगर permanent हुआ, then in that case idle or busy. Idle है तो no cost, busy है तो only contribution lost becomes the relevant cost. Moving on to overheads. Overheads में variable, the extra cost that you are going to incur. So जितना products बनाते जाऊंगा उतना variable cost incur करते जाऊंगा. That becomes your cost to be incurred. Variable overheads. Fixed is a bit important to understand. Fixed में when will it become relevant? It depends whether it is avoidable or whether it is unavoidable. अगर unavoidable है, मतलब ये project करूँ या ना करूँ, उतना फिक्स कॉस्ट इंकर होने ही वाला है, then again it is a committed cost, it is a irrelevant cost, its relevant cost is nil. बट अगर कोई फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है, मतलब ये प्रोजेक्ट की वजह से ही कोई फिक्स कॉस्ट इंकर करना पड़ रहा है, then that becomes avoidable fixed cost, rather that becomes logically a relevant fixed cost, because ये प्रोजेक्ट तेरी वजह से ये फिक्स कॉस्ट इंकर करना पड़ रहा है, वरना वो बच जाता था, वरना वो अवॉइड हो जाता था. कॉस्ट to be incurred for the avoidable fixed cost becomes a relevant cost.
Stated unavoidable fixed costs are sunk costs and ignored for decision making, and if fixed cost is changing due to decisions, then increase in fixed cost or decrease as the case may be is relevant for decision making. So this is about more detailed bifurcation of relevant cost for material, labor and overheads. Okay, so the remaining, now comes the indifference point. Now what is the indifference point? एक example के साथ start करते हैं. Suppose एक machine A है, machine B है. I'm confused. Machine A लूँ या machine B? Machine B लूँ या machine A? I'm confused. तो मैं देखता हूँ इसका machine A का variable cost 15 है, machine B का 12 है. Machine A का fixed cost 20,000 है, machine B का 30,000 है. अब करूं क्या? एक का वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, दूसरे का फिक्स कॉस्ट ज्यादा है. In such situations, you will find out the cost indifference point, that point wherein if you choose machine A or if you choose machine B, doesn't matter because the total cost will remain same. So it is called as a point at which, so the number of units that you are going to produce through machine A and machine B, in either of the cases is going to give you the same total cost, is what this cost indifference point tells you. So now, just putting it in terms of what I have said, so there will be a point that is called as a cost indifference point when my total cost of A will be equal to my total cost of B. What is total cost of A? It is variable cost of A plus fixed cost of A. What is that of B? I will say it is variable cost of B plus fixed cost of B. Correct? So now here, if you closely observe, this cost indifference point formula comes like that. So difference in variable cost, difference in fixed cost, so this will come here, and difference in variable cost, this will go there. Either ways, this is what your cost indifference point is going to give you. So just solving this example, I will say let the number of units to be sold be X. So 15x plus 20,000 equal to 12x plus 30,000 on solving x. So now how am I going to solve x? Difference of this, and that is how this formula comes. So that's basically a derivation as well. So represents a cutoff indicator for deciding on the most profitable option. There is a cutoff point, so at that cutoff point you are indifferent. You can go with either of them, either with machine A or machine B, you are going to get the same cost. Sir, what if the number of units are produced more than the indifference point? What if it is less? Then here again we have written some inferences. If it is below indifference point, then with lower fixed cost, because if it is below indifference point, then you have less number of units to absorb that fixed cost, so you will go with lower fixed cost. Whereas if it is above indifference point, then you can go ahead with lower fixed variable cost or higher fixed cost. Why? Again, the reason being that now the number of units are more than indifference points, so I will be able to absorb more, and therefore accordingly I will choose as far as indifference point is concerned. Alright. Next is the shutdown point. So at what point should I shut down? So say for example there is a recession. So in recession, companies are often faced with this issue whether they should continue or whether they should shut down. So if they continue, then they will make losses. They will be able to sell only X number of units, which probably will not take them to the profitability figure, but they will make losses. अगर समझो continue नहीं किया, तो फिर भी there will be some fixed cost which still you will have to incur. So either go ahead, continue and incur those losses, or shut down and just focus on the fixed cost which are any which case going to be incurred. So here if I continue, suppose if I continue, then there is a total fixed cost of 2 lakh that I have to incur. But if I shut down, then in that case there are only 75,000 rupees of fixed cost that I have to incur. So 75,000 fixed cost I have to incur in both the cases. But 1,25,000 of fixed cost can be saved. Whether I am able to recover that 1,25,000 from the units that I am selling, that is my shutdown point. So what is this difference? This difference is nothing but my avoidable fixed cost. Because shutdown किया तो ये इतना avoid हो जाएगा. तो इतना अवॉइड होने के लिए मेरे को कितना यूनिट्स बनाना पड़ेगा, वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो से मुझे पता चल जाएगा. अगर वो शटडाउन
अगर से फॉर एग्जांपल जो ये नंबर ऑफ यूनिट्स है ये शटडाउन पॉइंट से नीचे है, देन इन दैट केस आई एम नॉट एबल टू रिकवर दैट अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट देन बेटर टू क्लोज डाउन, whereas if it exceeds then I will continue. Even if it is same, I will probably continue. Then why to retrench the laborers and all of that things. So that is how this shutdown point works in terms of concept. Next is key factor or the limiting factor. What is this key factor? We are very much aware of it. Anything which limits the total production, resources are limited, wants are limited. तो वो resources limited रहेगा, but उसमें मुझे मेरा production या उसमें मेरा profit maximize करना है, magnify करना है. How am I going to do that? By using the concept of key factor or limiting factor. So limits achievable output. The best paying product becomes that which yields the highest contribution per unit of the limiting factor. So what is the profitability which you are going to calculate? You will calculate based on contribution per limiting factor. The limiting factor can be labor hours, it can be machine hours, it can be anything. Any resource can be a limiting factor. Based on that, I will take my decision, because that will give me a highest profitability ranked product, and that highest profitability ranked product will then be first made, and so on and so forth. So that is how things will work. So this is just a general explanation again of all the concepts, major concepts which are for your decision making, relevant costing. Rest you will have to stay focused on the question. So as in what the question comes, that can be a question on product mix, there can be a question on acceptance of a product, on discontinuance of a line, it can be on anything. All you have to use is the concepts that we have studied from the basics of marginal till this. Just recollect all the concepts, apply it in your paper, and you will be through as far as decision making question is concerned. Yes, the questions at times are lengthy, but to tackle all those kind of questions, the best way is to make a summary of the question as and when you are reading, so that the summary then can be utilized in order to solve the question once you are through with all the concepts. Trust me, it will not be an issue. Plus, you will have a good speed as well to solve each and every question that you are going to fix up. Okay, so concept wise we are done. कुछ sums for marginal relevant costing के कुछ sums है जो I'll just discuss in few minutes. I want to discuss each and every sum of decision making in detail, but तुम्हारे पास ये time नहीं है, तुम्हारे पास खाली एक डेढ़ दो दिन है, whatever it is. So I cannot deep dive into the sums that we are going to do. I can just give you a brief overview. 15 मिनट में 10-15 sum का एक थोड़ा idea दे दूंगा. As I said, I would love to solve each and every sum in the PM. I just love this chapter for sure. If you've been my live student, you would very well know that. Even if not, you want to be आओ कभी हवेली पे, innovative की हवेली पे. So you will come to know that how deep dive we can do as far as this chapter is concerned. Anyway, so फटाफट एक आइडिया ले लेते हैं क्या है ये चैप्टर के बारे में. डिसीजन मेकिंग पूरा मैं तुम लोग को थ्योरी पार्ट समझा चुका हूँ. वी आर डन एंड डस्टेड. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट फटाफट एक आइडिया ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 स्पीक्स ऑफ जंपिंग ब्रेक इवन पॉइंट. सो व्हाट इज जंपिंग ब्रेक इवन पॉइंट? जहां पे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो रहा है. सी अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता था? ब्रेक इवन पॉइंट एक ही रहेगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. बट अभी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट ही चेंज हो रहा है, मतलब उसके अंदर अगर सेमी वेरिएबल स्ट्रक्चर है या फिक्स्ड कॉस्ट इज टाइम एंड अगेन चेंजिंग, देन इन दैट केस माय दिस कैलकुलेशन विल बी फ्यूटाइल. कौन सा वाला? नॉर्मल कैलकुलेशन. तो उसके लिए at every cutoff point you will have to create a new break even point. वो नया break even point के बेसिस पे you will have to create a range कि कितने रेंज से कितना प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है, लॉस आ रहा है, एंड कितना अमाउंट पे आप कॉस्ट इंडिफरेंट हो. So that is what this question is. Question number 7 speaks of some semi variable cost. तो क्या semi variable cost है क्या नहीं? I'll just give on. तो semi variable cost structure से अपने को उसमें that semi variable cost divides itself into two parts. एक variable aspect, एक fixed aspect. When I have to calculate, say for example, a required sales. तो required sales is fixed cost plus desired profit upon contribution per unit. तो fixed cost में semi variable का जो fixed aspect है वो add हो जाएगा. Whereas वो semi variable cost का जो variable cost factor है वो contribution से उतना minus हो जाएगा. And you will be able to calculate the whole sum.
Question number 11 is what you have next. As I said, I've just randomly picked up. ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से आने वाला है. It can be anything. Decision making can be anything, and I want it to be anything. Typical questions आना भी नहीं चाहिए. Question number 11 is cost indifference point. We've discussed what cost indifference point is. तो अभी यहाँ पे कुछ machines का example दिया है A, B, C. तो कुछ किसी में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, किसी का फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, तो तीनों का अपन लोग को कंपैरिजन करना है. ए वर्सेस बी का कुछ आएगा, बी वर्सेस सी का कुछ आएगा, ए वर्सेस सी का कुछ आएगा. देन द होल स्ट्रक्चर शुड बी मेड इन सच अ वे दैट यू विल गेट वन रेंज, सेकंड रेंज एंड मिड रेंज. दैट इज हाउ द फाइनल आंसर शुड बी. एक रेंज इधर का, एक रेंज इधर का, एक मिड रेंज आना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 है, that we can just quickly see is purely based on your relevant cost. So जितना भी relevant cost के fundamental है, material, labor, overheads, fixed overheads, variable overheads, all of those fundamentals will come there. Committed cost, everything will be done there. A very beautiful concept of opportunity cost is also included here. So ensure that वो opportunity cost को भी interpret करके you realize that that opportunity cost is also a very relevant cost. ठीक है, so opportunity cost दिखेगा नहीं at the front, but again it has to be taken as a part of my cost structure. So keep that thing in mind. Then we have question number 28 as per Gray PM, everything as per Gray PM. So that 28 is anti limiting factor. एक होता है limiting factor. तो limiting factor में क्या होता है, contribution per unit and then contribution per hour. So contribution per limiting factor के बेसिस पे रैंकिंग देने के बाद होता है. बट यहाँ पे contribution ही फाइंड नहीं कर सकता मैं, पूछो FAQ, क्योंकि यहाँ पे सेल्स ही नहीं दिया है. तो सेल्स सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना है. यहाँ पे दो चीजें होती है, एक आइदर सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो फिर एंटी लिमिटिंग फैक्टर यूज करने का. तो मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल मैं, वो ऑप्शन था ना तुम्हारे पास मेक और बाय, तो मेक और बाय में यहाँ पे कंफ्यूजन है. अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ तो 25 और वही चीज को बाय कर लू तो 23, तो बनाने का क्यों, खुद बाहर से लेकर आने का ना 23, आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट. तो एक तो वो कॉन्सेप्ट है इसमें. दूसरा, अब बनाने का 25, बाहर से लाने का 28, तो आई विल मेक इट, बट वो बनाने के लिए भी मेरे पास 3 प्रोडक्ट बनाने का है, उसमें कुछ लिमिटिंग फैक्टर है कि मैं तीनों प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा हूं. समझे? सो दैट इज वेयर यू विल हैव दिस एंटी लिमिटिंग फैक्टर, जहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वो कॉस्ट के बेसिस पे एंटी लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 28. ठीक है, देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 38. क्विकली कमिंग टू दैट, सिंपल क्वेश्चन जहां पे यू नो इफ यू डिसकंटिन्यू एक्स व्हाट हैपेंस. एक डिमांड इलास्टिसिटी का है, दैट अगर डिमांड इज इलास्टिक, सो 20% से अगर सेल्स बढ़ता है, 20% से प्राइस कम होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा. ऑल ऑफ दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन वी आर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. पहले प्लस कुछ और करो, बाद में माइनस कुछ और करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, नेक्स्ट इज 51 मेरा फेवरेट है, गोल्डन पेट लिमिटेड. सो पहले तो सिंपल पूरा सम चलेगा, उसके बाद में कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट के बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू सब कॉन्ट्रैक्ट, वेदर यू हैव टू कीप इट विद यू. अपना वो जो अभी मैंने इंडिफरेंस पॉइंट पे ना तुम लोग को वो टेबल बनाया था, सो लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट हुआ तो खुद बनाने का, मोर देन इंडिफरेंस पॉइंट हुआ तो फिक्स्ड कॉस्ट देखने का, वेरिएबल कॉस्ट देखने का, वो सब चीज कीप दैट इन माइंड एंड देन यू कैन सॉल्व दिस सम. दिस सम हैज द फोर्थ पॉइंट एज अ कॉस्ट ऑफ प्रिडिक्शन एरर, विच इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट दे आस्क्ड. मतलब वो लोग ने कुछ प्रिडिक्शन किया है, वो प्रिडिक्शन के हिसाब से क्या प्रॉफिट है, और बाद में मालूम पड़ा कि रियलिटी में हुआ कुछ और. तो अगर जो हुआ वो सोच के किया होता तो मेरे को प्रॉफिट कितना आता, अब आया तो इतना, बट अगर प्रिडिक्ट सही किया होता तो इतना आता. तो प्रिडिक्शन एरर हुआ तो क्या आया, और प्रिडिक्शन अगर सही किया होता तो क्या आया. दैट इज माई कॉस्ट ऑफ प्रिडिक्शन एरर. जो उतना मेरा पार्ट छूट गया ना, जो प्रिडिक्ट किया उससे 12 रुपए का प्रॉफिट है, और जो प्रिडिक्ट हुआ उस हिसाब से 15 रुपए का प्रॉफिट है. तो कॉस्ट ऑफ प्रिडिक्शन एरर की वजह से 3 रुपए का नुकसान हो गया. दैट इज दैट कॉन्सेप्ट, फोर्थ पॉइंट ऑफ 51. बाद में है 57 आजा. 57 इज व्हाट, ओके, 57 इज नील गगन लिमिटेड. मैकडोनल्ड्स का जैसे कैसे वो ये रहता है मोटरसाइकिल वाला, उससे रिलेटेड है थोड़ा बहुत. सो यहाँ पे जो सेल्स कमीशन है उसके ऊपर पूरा गेम है. सो वी आर गिविंग अ सेल्स कमीशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 22%. अब अपन बोलता है इतना सारा मेरा मार्जिन खा रहा है वो, उससे अच्छा मैं खुद का एक फिक्स कॉस्ट डाल के सेल्स टीम ही डाल देता हूँ. तो वो मैं सेल्स टीम ही पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया. तो आई एम नाउ इवेल्युएटिंग कि सेल्स टीम डाला तो कितना कॉस्ट लगता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, ऑल ऑफ दैट पीवी रेशियो एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर. देन यू कैन गेट दिस आंसर. But also nice question. Then is 66, I think it is on shutdown point. उसके ऊपर रेगुलरली क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग शटडाउन पॉइंट के ऊपर. याद रखना अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट. सो कॉन्सेप्ट वाइज यू हैव टू थिंक लाइक दैट फॉर शटडाउन पॉइंट कि अगर मैंने शटडाउन नहीं किया और अगर शटडाउन किया
तो शटडाउन नहीं किया तो ज्यादा कॉस्ट लगेगा, शटडाउन किया तो कम कॉस्ट लगेगा, तो उसके अलावा भी देयर इज सम कॉस्ट विच दोनों केस में लगने ही वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वो चीज को कितना टाइम में मैं रिकवर कर पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो अगर शटडाउन किया तो से 1 लाख रुपीस का मेरा फिक्स कॉस्ट लगने वाला है, और अगर शटडाउन नहीं किया तो फिर मेरे को 2,50,000 का लगने वाला है। मतलब अगर नहीं किया ना तो 1,50,000 मेरे को ज्यादा लग रहा है ये केस में, तो अब इसको बोलते थे शटडाउन नहीं किया तो अभी 1,50,000 तुझे ज्यादा रिकवर करके देने का। कितना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है? से 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। मतलब अगर 10,000 यूनिट बेचा तो इंटू 15 1,50,000 रुपया मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो वो जो 1,50,000 मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, मतलब 10,000 के ऊपर अगर मैंने कुछ भी प्रोडक्ट बनाया ना, तो इट इज बेटर कि मैं शटडाउन ना करूं, बिकॉज फिर मैं रिकवर कर पा रहा हूं, जो अदरवाइज ऐसी 1 लाख तो दोनों में कॉमन ही है। गेम किसका? ये 1,50,000 जो अदरवाइज इधर ज्यादा लग रहा है, बट अगर मैं 10,000 यूनिट बेच पा रहा हूँ 15 के कंट्रीब्यूशन पे, तो आई डोंट माइंड। आई यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत क्विक फायर था, एज आई सेड, नहीं समझ में आया, यू कैन गेट बैक टू मी, आई विल एक्सप्लेन यू मच मोर डिटेल, मच मोर calmly. So that is about your decision making, and as I said, this is just a representative. They can ask any time question. Unlimited है as far as concept is concerned this chapter.